हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक क्लोज पे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 इज टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शन इन द रेस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस। दैट्स मीन आपकी प्रोटेक्शन करता है कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज आर्टिकल 20 टॉकिंग अबाउट. So in Article 20, Clause 1 is saying like no person shall be convicted of any offense except for the violation of law in force at the time of the commission of the act, charged as an offense, nor be subjected to a penalty greater than what which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense. So that's mean कोई भी व्यक्ति किसी भी offense के लिए convicted नहीं किया जा सकता जो कि law का violation ना हो. And again there is a like suppose there is a punishment. So जो punishment describe है उस offense में उस time पे when the offense is committed, you cannot punish more than that. Okay, and then now talking about Article 20 Clause 2, no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. कोई भी व्यक्ति किसी भी offense के लिए एक बार से ज्यादा punish नहीं किया जा सकता. Right? If suppose somebody is did an offense, you punish him once, then again you cannot punish him twice for the same offense. Okay, and no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. और किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ as a witness बनने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, मजबूर नहीं किया जा सकता. Okay, so now let's see in this again. So first, Article 20 of Indian Constitution have 3 clauses. So let's see one by one. First is established that no one should be convicted for any offense other than those violating the law in force at the time of the commission of offense, and also one could not be penalized with a greater punishment than what existed at the time of the commission of that offense. That mean कि क्या कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑफेंस के लिए लाइक जब वो ऑफेंस हुआ है उस टाइम पे अगर लॉ था उस ऑफेंस को लेकर के, तो हम उसको पनिश कर सकते हैं अंडर द सेम लॉ कि आपने उस लॉ का वायलेशन किया. If suppose there is no law at that point of time and after that law is like make on that point, then you cannot punish him. And second, जब उस टाइम पे उस लॉ का वायलेशन हुआ है तो उसके लिए जो पनिशमेंट थी, you can give you the same punishment at the time of like for that offense. You cannot come like punish to anybody more than that punishment, greater than that punishment at the commission of that act. Okay, second, no one could be convicted and punished more than one for the same offense involving the same set of facts. So किसी को भी आप दोबारा उस ऑफेंस के लिए पनिश नहीं कर सकते कि सेम फैक्ट है और सेम फैक्ट को लेकर के यू कैन पनिश हिम अगेन फॉर द सेम थिंग. Okay, and the third clause is talking about there is no one should be compelled to produce such evidence and information which could be used against him during trial in competing judicial tribunal. So किसी को आप मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ ही अपने आप को एविडेंस ला के दे कि मुझे आप कन्विक्टेड कर दो उस ऑफेंस में. ओके, यू कैन नॉट डू दिस. ओके, सो नाउ आर्टिकल 20 में हम लोग जो बात करते हैं कि नॉट सस्पेंड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी. जो आर्टिकल 20 है, even this is a fundamental right and this right is not going to suspend even during emergency. अगर देश में इमरजेंसी भी लग जाती है तो ये आपका जो राइट है फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 22 is not going to be suspended. Article 20 is among those articles of the Indian Constitution which cannot be put aside even during an emergency, thus form a cornerstone of the Indian Constitution. And there is a 3 legal doctrine which is talking we can talk in Article 20. So now let's do a survey to 3 legal doctrine of Indian commercial criminal jurisprudence which reflect the 3 clauses in Article 20. Now the first one is like ex post facto law, and second is doctrine of double jeopardy, and थर्ड वन इज प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. ओके, यहाँ पे 3 डॉक्ट्रिन हम आर्टिकल 20 के अंदर बात करते हैं. क्लॉज 1 में हम लोग बात करते हैं एक्स फैक्टो लॉ, क्लॉज 2 में बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी, एंड क्लॉज 3 में हम लोग बात करते हैं प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन. सो प्रोविजन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, what it is. So clause 1 of article 20
The provision in this question, such that Article 20 Clause 1 say that one must not be prosecuted and convicted in accordance with those law which did not exist at the time of the commission of offence by the accused, and also must not be inflicted with the punishment greater than those existing at the time of the commission. So जो ये लॉ है, ये बात करता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई उसको हम लोग प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, कन्विक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग विद द दोज लॉ व्हिच डिड नॉट एग्जिस्ट लाइक एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस। उन लॉ के अंदर हम किसी को पनिश नहीं कर सकते जब ऑफेंस कमिट हुआ, वो लॉ थे ही नहीं। ओके, एंड जो हम लोग किसी को, और जो पनिशमेंट है वो जो एग्जिस्टिंग पनिशमेंट है उससे जो पनिशमेंट उस टाइम पे थी उससे ज्यादा किसी को पनिश नहीं कर सकते। This provision neglects the change of the retrospective implementation of law regarding criminal offence. In simpler speak, the provision brings a clamp down to the legislative prerogative of the legislation by prohibiting a retrospective implementation of law having criminal nature. Okay, so ये इसमें बात की गई है। Now, the landmark judgment of governing the doctrine came in 1953 in case केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सो जो ये डॉक्ट्रिन है आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसकी बात की गई है, आपकी जजमेंट है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इन दिस केस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व दैट व्हेनेवर एन एक्ट इज डिक्लेयर्ड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस और प्रोवाइडेड पेनल्टी फॉर द सेम बाय द लेजिस्लेचर, it is always prospective in nature and cannot be implemented retrospectively to uphold what is being said under Article 20 Clause 1. However, only the procedure of sentencing and convicting is what is prohibited under this clause and not the trial itself. Thus, a person accused according to a particular procedure cannot be questioned under this clause and doctrine of ex post facto law. तो एक्स फैक्टो लॉ में जो बात की गई है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में, कि जो ये लॉ है वो प्रोसीजर लाइक आपको पेनल्टी को रिस्ट्रिक्ट करता है, प्रोसीजर को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। यू कैन रन द ट्रायल, दिस लॉ इज नॉट गोइंग टू स्टॉप द ट्रायल। दिस इज लाइक सेइंग कि यू कैन नॉट पेनलाइज टू एनीबॉडी to the law, that law will not exist that time of offenses happen. Okay, and now double jeopardy, clause 2 of Article 20. So what is the double jeopardy? Double jeopardy is doctrine of double jeopardy which trace back its origin to the American jurisprudence of the punishment. Means that no person can be prosecuted and punished twice for the same offense in the subsequent proceeding. And Article 20 in clause 2, which read that no one could be convicted and punished more than once for the same offense involving the same set of fact guaranteed against the multiple conviction and double jeopardy. So इसमें क्या बात करी गई है कि किसी भी व्यक्ति को you cannot punish twice for the same offense, same set of fact is there and you cannot penalize to anybody twice for the same offense. कि आपने ये offense किया था, now we already punished you for the same, then again you are going to punish. So this is not going to be happen. Okay, now prohibition against self-incrimination, clause 3 of the Article 20. Another foremost rule which provides the protection from a conviction for offense is prohibition against self-incrimination. The same is provided by the Constitution of India in Part 3 of under Article 20 Clause 3. It's described that no one could be forced to utter and provide such information or evidence orally or by documentary means which could be used against himself during the further trial procedure. That's mean इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ अपने आप से कोई एविडेंस नहीं देगा कि जिससे वो खुद ही कन्विक्टेड हो जाए फर्दर ट्रायल में। Okay, this is the simple understanding of it. Okay, also the term witness, और अपने खिलाफ कोई खुद गवाही नहीं देगा. So also the term witness include both oral and documentary evidence as held in MP Sharma versus Satish Chandra as held in the same case. However, there is no restriction where a search for document or seizure is being done by the authorities. However, the information and evidence produced वॉलेंटरी बाय द अक्यूज इज परमिसिबल। सो अगर कोई अक्यूज अपनी मर्जी से
अगर कोई इंफॉर्मेशन या एविडेंस प्रोड्यूस कर रहा है तो वो परमिसेबल है, बट यू आर नॉट कंपेल और बोदर टू एनीबडी टू प्रोड्यूस द एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ or herself. So this is it. So thanks for watching the video. If you like it, please like, comment, share and subscribe the channel.